जय हिंद सभी को। तो आज है अपना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 41। तो जैसे कि 41 to 45 डेली सुबह ये वीडियो 9 बजे आ जाती है मेरे यूट्यूब चैनल हरिओम यादव। 41 93 पे आप सर्च करोगे तो उस पर आ जाएगी। अब बात करते हैं 41 रूल नंबर 41 की। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउंस कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है प्रोनाउंस का वो प्रीपोजिशन के बाद आता है। जैसे सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। सब्जेक्टिव केस जैसे आई होता है तो ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव, यू सब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव, दे देम, ही हिम, सी हर, इट। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो नन बट ही इज गोइंग टू पार्टी। नन बट ही इज गोइंग टू द पार्टी इनकरेक्ट है। अब करेक्ट फॉर्म क्या हुई तो नन बट हिम, नन का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। नन बट हिम इज गोइंग टू द पार्टी करेक्ट सेंटेंस है। ऑल एक्सेप्ट ही लाइक द परफॉर्मेंस इनकरेक्ट है। ऑल एक्सेप्ट हिम लाइक द परफॉर्मेंस करेक्ट है। इन द फर्स्ट सेंटेंस में बट प्लेज द रोल। इन द फर्स्ट सेंटेंस बट प्लेज द रोल ऑफ प्रीपोजिशन, सो इट मस्ट बी फॉलोड बाई a pronoun of objective case. Similarly, except in the third sentence is a preposition which should be followed by the pronouns of objective case. Note but plays the role of both conjunction and preposition. but दोनों का रोल प्ले कर रहा है, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। Note but plays the role of both conjunction and preposition. Verb is also followed by the pronouns of adjective cases. Example: let him do that work. Let us act as a verb here. They agreed to let us live there rent free. Let us act as a verb here. Some more examples: Ram as well as he is going to the party ये करेक्ट है। there is good friendship between you and him करेक्ट है। it is to be noted that in the first sentence as well as is not used as a preposition, so the subjective case he is correctly used. in the second sentence between is a preposition, so objective case is used after it. अब बात करते हैं रूल नंबर 42 की। फर्स्ट में इन केस ऑफ प्रोनाउंस एज द सब्जेक्ट व्हेन ऑल द थ्री पर्सन्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आर कनेक्टेड बाई and the sequence of 231 of the pronouns is followed if they give a positive sense to the sentences and a plural verb is used. We use second person, then third person is used, and finally first person is used. फर्स्ट में स्पीकर फर्स्ट पर्सन आई होगा, सेकंड लिसनर सेकंड पर्सन यू होगा, नॉन एक्टिव थर्ड पर्सन यू होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल: यू कॉमा ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू तुम, ही वह, एंड आई तीनों गुड फ्रेंड हैं। द सीक्वेंस ऑफ 2 3 1 ऑफ द प्रोनाउंस यू तुम, ही वह, आई मैं खुद, 2 3 1। सेकेंड, इन केस ऑफ प्रोनाउंस एज द सब्जेक्ट व्हेन only two pronouns are used as the subject of the sentence and are connected by and the sequence of 2 3 2 1 ratio comma 3 1 of the pronouns is followed if they give a positive sense to the sentence and a plural verb is used. Example: you and she are good friends. The sequence of 2 3 of the pronouns you and I are playing chess. The sequence of 2 1 of the pronouns he and I are watching TV. The sequence of 3 1 of the pronouns. In case of pronouns as the subject when all the three persons are used as the subject of the sentence and are connected by and the sequence of 1 2 3 of the pronouns is followed if they give a negative
to the sentence and a plural verb is used. They generally talk about some mistake, blame or guilt. एग्जाम्पल के लिए I, you and he are guilt. The sequence of 1, 2, 3 of the pronouns. I, you and he are robbers. The sequence of 1, 2, 3 of the pronouns. Fourth है in case of pronouns as the subject when only two persons are used as the subject of the sentence and are connected by and. The sequence of 1, 2, 2, 3, 1, 3 of the pronouns is followed if they give a negative sense to the sentence and a plural verb is used. Example, I and you have committed a crime. The sequence of 1, 2 of the pronouns. You and he are sinners. The sequence of 2, 3 of the pronouns. I and he were guilt. The sequence of 1, 3 of the pronouns. If all the pronouns are plural, we use the order 1, 2, 3 in all cases. We, you and they are going to watch a movie. अब बात करते हैं रूल नंबर 43 की. सम superfluousness errors. Superfluousness error means that more than required. Superfluousness error means होता है more than required, जितनी जरूरी उससे ज़्यादा. In that more than required is given in the sentence. It means extra. Consider these examples. अब इन एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हुए क्या करेंगे. इंडिया ब्रोक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड इन टूडेज मैच. इनकरेक्ट है. द अबव सेंटेंस इज सुपरफ्लुअस एज रिकॉर्ड्स ऑलवेज स्पेसिफिक प्रीवियस. यूजिंग देम टुगेदर मेक्स ए स्टेटमेंट सुपरफ्लुअस. इट शुड बी रीरिटन एज द इंडिया ब्रोक ऑल रिकॉर्ड इन टूडेज मैच. करेक्ट है. ठीक है. प्रीवियस क्योंकि सारे रिकॉर्ड टूटे हैं तो पिछले वाले जो बने हैं वही टूटे हैं. आई वॉन्ट वेट वाटर. इनकरेक्ट है. वाटर इज ऑलरेडी वेट एंड वी ऑल नो इट. Hence, this sentence contains extra word and superfluous error is here. I want water. Correct है. In the above examples, water is always wet. So, we cannot use these two words together as it will give us the superfluous meaning. Third है, suppose if you won the Oscars, what would you do? Incorrect है. Suppose you won the Oscar, what would you do? बारिश से स्टार्ट हो गई, थोड़ी आवाज़ जा सकती है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं. इन द अबव एग्जांपल द यूजेज ऑफ इफ विथ सपोज इज सुपरफ्लुअस. हेंस आइदर सपोज और इफ शुड बी यूज. अब बात करते हैं आगे. नोट. यूज ऑफ सपोजिंग इफ इज नॉट नीडेड विथ सपोजिंग. इट्स ए रॉन्ग यूजेज. यूज ओनली सपोजिंग. फोर्थ में है द आर्मी रिट्रीटेड back from the conflict zone in Kashmir. Incorrect है. The army retreated from the conflict zone in Kashmir. Correct है. Again in the above examples, back won't be used here. Retreat itself means to withdraw, retire, etc. We use only retreat. The sage was reborn again in the Vijayanagara. Incorrect है. The sage was reborn in Vijayanagara. Correct है. अब नोट में क्या कहते हैं. नोट में never use again after words like rebirth, reborn, rebuild, regain, retreat, recast, etc. Manu is equally as good as Sarma. Incorrect है. Manu and Sarma are equally good. Correct है. Manu is as good as Sarma. Correct order है. अब बात करते हैं आगे. In the above example, the usage of as should be strictly be discarded. Use only equally or as good as separately. The manager and the chairman decided on mutual agreement on profit. Incorrect है. The manager and the chairman decided on an agreement on profit. Correct है. In this case, the usage of mutual is wrong. Hence, use only agreement. Agreement is always mutual. ये agreement क्या होता है? हमेशा mutual ही होता है. Note. Mutual friends is wrong to say. Instead we can say common friend. Likewise we should say common interest and instead mutual interest. फोर्थ में है she forbade me to not to have her alone etc. She forbade me to leave her alone. Correct है. In the above example, not is never used after
until, unless, forbid, prohibit, prevent, dissuade, deny, refuse, lost. He is coward man, a person, etc. Incorrect है. The usage of coward man is wrong because coward itself means a person who lacks courage. Hence, the usage of man is illogical. She left the house with bag and baggage. Incorrect है. She left the house, bag and baggage. Correct है. Bag and baggage is an idiom which means it all belongs. Hence, using with the idiom is wrong. Passing marks are 33. Pass marks are 33. Correct है. The usage of passing marks, linkage, language, linking network, dressing sense is wrong. Instead, we should use pass marks, linkage, language, link network, redress sense. Dress sense. I suddenly come across him on the train. Incorrect है. I come across on him on the train. Correct है. In the above example, omit suddenly as come across means to meet suddenly. Some more superfluous error. Final destination is always final. Rough estimate is always rough. Rough approximation is always rough, not exact. Past history is always past. Return back, return itself means come back. Coming future is always coming. Reason because, reason itself means cause. So consensus itself means collective opinion or agreement. Final conclusion is always final. Funeral services, funeral itself is a ceremony and services. Note, enter into is also an example of superfluous error. However, when enter into is used as a phrasal verb, it means investigation. Rule number 44, use of apostrophe s. Apostrophe s is not used with non-linking things. Example, टेबल लेग्स इनकरेक्ट है. डोर टोल्ड, डोर्स बोल्ट इनकरेक्ट है. पेंसिंग इनकरेक्ट है. बुक्स पेज इनकरेक्ट है. चेयर्स लेग्स इनकरेक्ट है. दिस कैन बी रीरिटन है. लेग्स ऑफ द टेबल करेक्ट है. बोल्ट ऑफ द डोर करेक्ट है. इंक ऑफ द पेन करेक्ट है. पेन्स ऑफ द बुक्स करेक्ट है. लेग्स ऑफ द चेयर करेक्ट है. नोट, देयर आर सम एक्सेप्शन to this rule. When we talk about weight, distance, place, idiom, unite, personification or heavily body, we can use apostrophe s with them. Example, 1 week's vacation correct है. $4 worth correct है. Today's date correct है. The ship's belts correct है. The city's park correct है. Malaysia's land correct है. Nature's call correct है. At stone's throw correct है. Note, the following pronouns are already possessive and do not require apostrophe. Yours, ours, its, theirs, his, her and whose. अब बात करते हैं रूल नंबर 45 की. तो रूल नंबर 45 में क्या है? Whenever a point of the time in the past is mentioned in the sentence, example, yesterday, 10 years day, 10 days ago, etc., we always use simple past tense. Example, I have gone to the market yesterday to purchase a car. Incorrect है. I went to the market yesterday to purchase a car. Correct है. The company's share have dived by 90p to 160p on the stock market last week. Incorrect है. The company's share dived by 90p to 90 पैसा to 165 पैसा on stock market last week. Correct है. ये था आज का रूल नंबर 45. तो आप लोग हरिओम यादव टेलीग्राम चैनल को, हरिओम यादव 95 टेलीग्राम चैनल का नाम है. तो आप इस सर्च करके फॉलो कर सकते हैं. मिलते हैं नई वीडियो के साथ. जय हिंद, जय भारत.